Not to pile on. This is my self impression, by the way. We are mango people. आम आदमी. पर तू हमेशा सही पॉडकास्ट सुन लेती है जाने मन. Welcome to Hazard Age. Well, that was a hodgepodge of 3 different quotes which I totally butchered. Yeah, Saif Ali Khan, Om Puri, Pran. Yes, all of them. My name is Abbas. With me in the studio is my co-host Urjita. As always. Yes, and today we are discussing the follow-up film of one of India's most well-known directors. हमने इनकी इसके पहले वाली फिल्म के बारे में एपिसोड किया था, which was Jab We Met. But today we're talking about Love Aaj Kal 2009. Yes. Not 2020. 2009, Love Aaj Kal, starring Saif Ali Khan and Deepika Padukone. And with us in the studio to talk about the film is filmmaker, screenwriter Garima Pura and Urjita. She is also the writer of renowned Netflix show Little Things and also the Oscar-winning documentary The Elephant Whisperers. Boom! There you go, guys. और ये तो मतलब कुछ 50 कामों में से सिर्फ 2 ही काम है. 100 कामों में से गरिमा don't undersell yourself. इसके बाद नीचे प्लीज नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, जिसको काम देना है मुझे दे सकते हो. So guys, now we have an Oscar winner on the show, or someone who worked on a production which won an Oscar. So अब ये छोटा मोटा podcast नहीं रह गया. This is a very prestigious podcast now. But Garima, welcome to the show. Thank you. And this is not water, this is vodka. Vodka, is, 69, Greyhound, Green Apple, everything. This is coffee only. Amir vodka, this is Green Baileys. I don't even know the names. Green Baileys? Okay. Whatever it is, it's expensive drink. ये बहुत expensive है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा. Oh my God. But Garima, once again, welcome to the show. And when we came to you for a film choice, आपने Love Aaj Kal choose की. क्या ये आपकी एकदम favorite movie है? यार मैं ना अभी रिसेंटली इम्तियाज अली की पिक्चरें रीवॉच कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ अच्छा हिंदी देखने का मन था और सर ने शुरू में भाई ने अच्छा काम किया. भाई ने शुरू में बड़ा अच्छा काम किया. सोचा ना था पर फिर भी बिल्कुल तो फिर भी अच्छा काम कर दिया. बट हाँ, और मैंने तो आई थिंक जब भी मैं बोली थी, मुझे पता नहीं था आप लोगों ने वो कर ली थी. तो एज समवन हु इज रीवॉचिंग हिज फिल्म्स, आई वाज लाइक व्हाई नॉट, राइट? लाइक and this was one of the ones you revisited recently? Recently, yes. Okay. So I did Jab We Met, Love Aaj Kal 1, Cocktail. अब मैं ब्रेक मारने वाली हूँ, उसके बाद ज़्यादा कुछ जो माल आया था वो थोड़ा Cocktail, of course, written by Imtiaz Ali, but not directed by him, I think. One of the two. Not directed, you're right. Yeah. All right, so we'll get to Love Aaj Kal. We'll get to know what we like about it, what we dislike about it, what impact it had on Garima's psyche, and what about Imtiaz Ali we love and what we don't love, and how does it compare to Jab We Met. All of that. And we'll also compare it a little bit with the new Love Aaj Kal, which... मुझे तंग करने लगे हो. Which, whether you like it or not, is a film that exists, and we need to talk about that as well. But all of that and more on the other side of this break. Hello, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On The Wire Talks, Siddharth Bhatia talks to filmmaker Onir about the ongoing marriage equality case in the Supreme Court and what its repercussions could be. On All Things Policy, Saurabh Todi and Manoj Keval Ramani discussed the recent visit of the Chinese Foreign Minister to India for the SCO Summit and his bilateral meetings with other foreign ministers. And on the Habit Coach podcast, Ashton shares tips to stop the negative mind chatter and how to fill yourself with positivity. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you over there. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Cash Free Payments and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. What are your first memories of watching Love Aaj Kal? Apart from the fact that I was depressed, मेरी ज़िंदगी में एक ही बहुत ज़रूरी मकसद था कि मुझे जब वी मेट वाले डायरेक्टर की नेक्स्ट पिक्चर देखनी है. तो मैं चंडीगढ़ में पता नहीं तब मतलब ऐसा नेशनली था या नहीं था, बट हम तो पफ बनाते थे. पफ बनाते थे बाल इकट्ठे करके ऊपर से ऐसा माउंटेन. Is that what a juda is? सर वो पीछे होता है. Oh, sorry. और उसमें सारे बाल वो टेक्निकल है थोड़ा. तो यहाँ पे एक रिबन बांध के टी शर्ट होती थी, वहाँ मैं गई, बहुत सच के गई थी. मैंने कहा आज कोई मिलेगा मुझे थिएटर में देखेगा. और केपरी केपरी मुझे अपना आउटफिट याद है, ठीक है. मैं कुछ दोस्तों के साथ गई थी. हाँ, मेरी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को मिली थी और मैं बस पिक्चर देख रही थी.
तो आई थिंक उस टाइम पर समझ नहीं थी कि भाई बोलना क्या चाह रहा था. अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है समझ आ रहा है. एंड आई मीन अहेड ऑफ इट्स टाइम तो थी. तब मुझे गाने अच्छे लगे थे. तब मुझे ये अच्छा लगा था कि as someone from Punjab, this guy is obsessed with Punjab पहाड़ and I vibe. I agree, I relate. And Punjab पहाड़ and Delhi. Right. Right? Punjab Pahad and Delhi is like very Imtiaz, and he does it nicely. Yeah. So, and again, as someone who is from that space, मुझको तो मतलब I'm like इसको समझ आता है. He sees me and us, you know. So I think तब मुझे वो अच्छा लगा था. As I said, like you know, over the years, it's how he looks at relationships. Right. Yeah. And हम अभी भी struggle कर रहे हैं healthily breakup करने का. वहाँ पर सैफू और दीपू ने बढ़िया मतलब ऐसा. Yeah, we'll come to that. बढ़िया though. There was nothing बढ़िया about that breakup. But you लड़े नहीं यार. किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया. ये मैं नहीं चाहती मेरे एक्सेस मुझे ब्लॉक करें. उस पे भी हम बात करेंगे. इस एपिसोड में हम तीनों की डेटिंग हिस्ट्री विल कम टम्बलिंग आउट. सो विल गेट टू दैट. बट यू डिडंट कम आउट एज इम्प्रेस्ड एज यू वर विद जब वी मेट. आई एम अज्यूमिंग बैक देन. No, I loved it. Okay. How old were you, if I may ask? अभी मैं 27 हूँ. मैथ्स कर लो. 14 साल पहले. You were not that old. हाँ, you were 13 back then. Okay. आप लोग क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? Listen, so when she started, I was like, अरे ये गरिमा इतनी old है, ये तभी इसको existential crisis क्यों हो रहा है? Fucking 13 साल की बच्ची को क्या existential crisis हो रहा है? As a current writer, मुझको 4 साल की उम्र से crisis होने शुरू हो गए थे. तो Which means you were 11 when Jab We Met came out. आइए हम क्यों कर रहे हैं? अभी मुझको जो 4 प्रोजेक्ट मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे. पहले उनको लगता है मैं औरत हूँ और छोटी हूँ. औरत हूँ नहीं नहीं, she was ahead of her time. मैं भी ahead, इम्ति भी ahead. दोनों ahead. या तुम डोरेमोन देखते वक्त बोल रहे अरे शिजुका ने गलत किया नोबिता के साथ. ओ डोरेमोन का सुपर, that is a different cartoon. I don't get any of those references. अरे नोबिता डोरेमोन मैं नहीं देखा क्या कभी? तुम्हारा दोस्त, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा. Exactly. I was busy growing up very quickly. Yeah, she was busy with Geet and whatever Shahid Kapoor's name was. Sorry, एक मिनट, तुमने कोई कार्टून नहीं देखे? मैंने कोई देखे हैं. कोई कार्टून मैंने देखे हैं. कौन से देखे? Name 5 cartoons right now. Oswald, Pingu, Pingu classic. Noddy, Yes. आ गए Noddy, Bob the Builder. कुछ भी बोल ये प्रेशर हो रहा है, ये 5 का प्रेशर हो रहा है कसम से. डिज्नी बहुत देखा है मैंने. उसमें बहुत कार्टून आ गए. अच्छा तुमने बेसिक अरे देखी नहीं? ये तो पोगो वाले कार्टून्स है ना. हाँ. ये तो सभी देखते हैं. स्कूबी डू. पोगो कार्टून. सॉरी यार, मेरे घर वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी. व्हाट इज दिस पोगो वर्सेस कार्टून नेटवर्क राइवलरी? अरे क्योंकि पोगो वाले जो होते थे कार्टून्स वो कभी कभी बड़े लोग भी देखते थे. बट डोरेमोन वाज फॉर किड्स, स्ट्रिक्टली फॉर किड्स. काफी सही होता था. बट या एनीवे, फ्रॉम डोरेमोन लेट्स कम टू इम्ति भाई. नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस. Ouch. Oh my god. Urjita, your first memories of watching Love Aaj Kal? 2009. 2009. So I remember in the afternoon today I was watching Love Aaj Kal for the first time. Really? What? Yeah. I watched it in bits and pieces. Okay. Back then TV पे I was 11 years old जब वो आई थी तभी. तो I remember हमारे स्कूल में सबने देखी थी और मेरा पता नहीं weird ऐसे अजीब ऑब्सेशन होता था कि if everybody is watching a movie then I am not watching it. मैं वो हाइप को डाई डाउन. हाँ सिस्टर मैं अभी भी ऐसी है. I wait for the hype to die down. And the problem is कि एक तो I was very intrigued about the movie because दीपिका पादुकोण वो जो कपड़े हैं, ठीक है, suddenly like till yesterday everybody was wearing regular t-shirts और वो मूवी आने के बाद सबके t-shirts बड़े हो गए suddenly. कुर्ते बन गए. टाइट फिटिंग कुर्ते भी नहीं, कुर्ते हाँ वो कुर्ता भी बड़ी वन द टाइट फिटिंग t-shirts, वो जो जिसमें से ऐसे जीन्स के पूरे हड्डियां दिखती थी वो वाले t-shirts वो सब पहनने लग गए थे. And when I was watching that movie it all came like flashing कि अच्छा oh fuck yeah I remember कि the cultural impact Deepika Striko's had. Even though like her acting not that great. I agree. Sorry Garima, you disagree. नहीं मैं just कुछ किसी को तो करना पड़ेगा. I don't devil. तो तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें force Wow, it's almost like Deepika's here. this whole right left like that is तुम ये जो कथक उसका I feel like उसका edit बनाना चाहिए कि तुम ये दूरी like Saif is showing so much range. She's like कि अगर मैं तुम ये क्या वो ऐसे वैसे यहाँ देख रहा दीपिका
क्या क्या कह रहे हो, उसका यही चालू है पूरा. इसलिए कैमरा भी नहीं. द वन इम्पोर्टेंट सीन जिसमें सैफ इज कन्फ्रंटिंग हर, यू नो, व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, ही इज टॉकिंग टू द वेडिंग. सो जिसमें ऐसा लग रहा है कि सैफ ने ये डायलॉग खुद ही लिखे, ये इम्प्रोव कर रहा है भाई. ये ऐसे तो नहीं लग रहा ये स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा हुआ है. एंड अगर लिखा भी होता तो क्लाइंट रिजेक्ट कर देता, ये क्या चूतिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो सैफ वाज डूइंग दैट. दीपिका के ऊपर शैडो है. यू कैन नॉट इवन सी यहाँ से क्या हो रहा है. आई फील उधर भी इम्तियाज खड़ा हुआ रहेगा फॉर मोटिवेशन, ऐसे कि ऐसे कर रहा है. Why did you just shit on Garima's profession like that, saying, oh, ऐसा लग ही नहीं रहा स्क्रिप्ट राइटर. I am also a script writer. What is wrong? तुम हमारी लड़ाई करवाना चाहते हो दोस्त. ड्रामा कम मिल रहा है तुमको इस पॉडकास्ट में. ये इम्तियाज अली की मूवी में जो राम सीता और गीता इसने करवाया है. This is very. सीता और गीता were sisters. No, anyway, आप डिफेंड करी थी. बिल्कुल मैं दीपू दीदी का बताती हूँ. मुझे क्या लगता है कि बेसिकली ना, अनपॉपुलर ओपिनियन बट क्लियरली, तो आई थिंक बहन वॉज सटल फॉर हर टाइम. ये क्या मैं फैन हूँ पता नहीं. फरदीन खान वॉज ऑल्सो वेरी सटल फॉर हिज टाइम, आई फील. नहीं देखो, सलमान खान इज ऑल्सो वेरी सटल इन हिज फिल्म्स. फॉर आवर टाइम ऑल्सो सलमान खान इज वेरी सटल. ट्रू. नो, सो लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक वो देती है बहन ऐसा कुछ आंख में करती है, थोड़ा फेशियल मसल हिलता है, ऐसी बात नहीं है. मुझे बस वो चैटर याद है उस टाइम पे कि भाई दीपिका को एक्टिंग नहीं आती है एटसेट्रा. बट अच्छा हुआ था क्या वो काफी चैटर हुई थी इस बारे में ना कि she doesn't emote, but I felt like she was very Piku-esque. I know this is unpopular, but I mean the script and the story was very different. But dude, she did okay only. I feel like maybe the direction to her was, you are the calm, composed woman who knows everything, four plot lines in advance. Yeah. So you have to, and he's the manic pixie. So बहन तुम composed रहोगी. मुझे ऐसा लगा. तो maybe the brief was where she was a little restricted. Your शक्ल tells me like बिल्कुल agree नहीं कर रही है मैं. Yeah, no, I agree that she was said that you know everything 4 plot lines in advance. हाँ. 3 plot lines थे. So I get it. Plot lines, okay. 3 plot lines थे. बिल्कुल. एक और चीज, I think the only problem with her is that maybe she's very aware of the fact that her smile is very attractive. तो बहन हर जगह Right. एक दे देती है. तो एक वो, और दूसरा कि I think she's very aware of how she's looking. When she's not doing these things, I think she's good. So like for example चोर बाजारी में जब वो दारू पी के वाला करती है सारा सीन, that's really nice. I think वो करा उसने, let go किया. आप दोनों इतने unconvinced हैं. मेरा मन कर रहा है पूछने का. मैं और बोलूँ या आप convinced हो गए? पीको में she has acted very well. Om Shanti Om में also she has acted very well. Om Shanti Om, the character, the character thing was designed around that she has to be like this pristine, pretty actress who's like really, who can't show all her emotions because she's such a big actress. So I think that was designed for her. In this, she's not bad, but मुझे देखते लगा now of course she's a much better actress. Maybe comparison, of course she was much better than Nargis Fakhri in Rockstar. But or the Punjabi girl who past flashback Giselle Monteiro. That अरे वाह, research करके रही है बहन. हरलीन कौर, Instagram पे उसके 16,000 फॉलोअर्स हैं अभी. मैंने उसको स्टॉक किया. Okay, Urjita. But I was interested to hear what you have to say, because you said he's the manic pixie, Saif's character. Why would you say that? So वही है, थोड़ा उसका ही फैला हुआ है वो. उसको भाई को समझ नहीं आ रहा, बहन वेट कर रही है कि तू समझ ले पहले, तू देख ले. एंड लाइक यू सी, इफ यू नोटिस्ड इम्तियाज की पिक्चरों में पीपल थिंक अलाउड लिटरली. ये इम्ती वर्स का वो है. एंड एट वन पॉइंट ही आल्सो एड्रेसेस दैट इन फ्रंट ऑफ हर, व्हाट इज हर, राहुल खन्ना. In front of Rahul Khanna, when he meets him, he is talking to himself and he's like, मैं खुद से बात कर रहा हूँ. Yes. ये ना मैं बताती हूँ कब होता है. ये तब होता है जब प्लेटफॉर्म या प्रोड्यूसर फीडबैक देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर राइटर बोलते हैं हम एड्रेस कर देते हैं. डायलॉग में एड्रेस कर देते हैं, हम रखेंगे. बट सर थोड़ा एंड में एड्रेस करेंगे, क्योंकि थोड़ा पहले एड्रेस कर दिया तो फिर सारा चाम चला जाएगा. ट्रू. ये क्वर्की है, ये एक्सेंट्रिक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. सर आप अभी तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, पर 15 साल बाद आप ऑडियंस को पूछे, वो पॉडकास्ट कर रहे होंगे इस पे. पॉडकास्ट करेंगे सर. Okay, we're getting a little ahead of the plot, so let's rewind 4 back a plots little. ahead, you mean? Yes, 4 plots ahead. I was 21 when this movie came out. I remember it came out with a lot of hype because it was a follow-up to Jab We Met. Yeah. And Jab We Met was a hit in theatres and also in the 2 years since it had become like a cult hit also, because a lot of people saw it on their laptops or whatever. And I remember I saw it with a full house, and the general aura after the movie ended was, at least from what I remember, was यही कि यार उतना मजा नहीं आया जितना मजा जब We Met में आया था. There was that little thing. And I also felt, and this was the first time I saw the film since I saw it in the theatres, like at a stretch. And
I felt that it was missing that Geet-like character. There isn't enough spunk in the movie. Like if you remember when we were doing the Jab We Met episode, we were talking about how even the little things really come together. The taxi driver, the station master, and all of that. It just forms a punch, which I thought was a little bit missing here. And it also deals with a much mature theme, I think. But let's get to the actual movie. So the film starts with Saif's character, and he is in London. And I like that first few scenes में आप establish कर देते हैं कि वो relationship हुआ, courtship हो रहा है. You don't have to go through a lot of that. I want to talk about Veer Das. Are you guys cool to talk about Veer Das? Remember a time when... twist उसमें so Saif नाच रहा है लड़की के साथ, ठीक है? She is also like willingly, unwillingly dancing with him. Okay? So Veer is dancing with a girl, okay? And he is also like Veer is, I feel like he's also talking to her at one point कि come on, we have to do this. He has like barely हम 2 lines. हम पढ़ने पे आए, ठीक है? वो भी नाच रहा है. But the third friend, okay, the almost टकलू friend, वो यहाँ पे है, उसके साथ बंदी भी नहीं है. Very sad. तो इन दोनों को like literally like इन ऐसे अगर इन सब में इतना difference नहीं, इतना अगर gap है, ये बंदा लड़की यहाँ पे, ये लड़का यहाँ पे. देख हर ग्रुप में एक होता है या होती है जिसके पास साथ कोई नहीं नाचता. Wow, no personal attack, guys. I'll come dance with you wherever you ask me to. But you know who that guy is? It's Kavi Shastri, who's Veer's real life best friend. Oh, yeah, he's also an actor and a model. So I was very surprised he has more lines in the film than Veer. I've forgotten a time when Veer was basically a glorified extra where he just has to be in the background. And yeah, so that was a fun memory trip. But Veer looked very cute. Even back then? Yeah. Okay. I think he Do you looked agree, cute. Garima? Yeah. No. Which is why I was quiet. I'll be honest with you, he looks like a chomo in that movie. I feel like a lot of men don't look nice in that film, including Saif. Yeah. दीपिका बेचारी उसके कंधों पर, उसके बालों पर, उसके कपड़ों पर पूरी पिक्चर का aesthetic value carry हो रहा है. And Saif looked like, I don't know. He I don't looked know if I should older say than he his looked role. older. Yeah. Having much said older, that, yeah. Saif as a Punjabi is so hot. Yeah, that's true. I cannot. In Sacred Games, no. In Sacred Games, in this yeah. too, when he Yeah. dance, वो क्या भांगड़ा कर रहा है भाई? Oh yeah, that भांगड़ा वाला scene बहुत सही था. हाँ, Saif is, he should have been Punjabi. Never. ये मेरा अपना कोई बात इम्तियाज अली ने भी वही सोचा था. I feel like वो जो alternate plot line थी, मतलब I know controversial opinion बहुत coming very soon, but I feel like वो alternate plot line की इतनी जरूरत नहीं थी. What are you saying, Urjita? I thought that was the best part of the movie. Wow. Yeah. What was I the would want alternate? like the past वाली जो storyline थी. अच्छा, you're saying उसकी जरूरत नहीं थी? Dude, that's the whole crux of the movie though, isn't I it? mean, maybe उसको थोड़ा और better कर सकते थे, because like to me, I don't know, it's just... Better in which way? Like what? Huh? Now let's grill If, Urjita. I'm just curious. So I feel like first of all, एक तो पूरे मूवी में, ये तो मेरा ग्राइप है ही, कि पूरे मूवी में जो फीमेल कैरेक्टर है उसका इतना एजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है. एंड इट्स नॉट दैट हम ऐसा नहीं बोल सकते पुराने ज़माने की मूवी है, क्या पता उनको नहीं. ही न्यू व्हाट एजेंसी मीन्स, क्योंकि जब भी मैट हमने देख ली थी, है ना. तो इसमें भी आई फील दीपिका ना छोड़ो, हरलीन को अगर कुछ कैरेक्टर दे देते थोड़ा बहुत तो भी चल जाता था. सो एक तो वो नहीं था, पहली बात तो. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, आई डिडंट लाइक द मूवी दैट मच. Oh my God. ठीक ही है. मतलब ठीक ही है. ठीक है. एक तो सी मेरा ना आई हैव दिस ग्राइप विथ मूवीज दैट जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कंफ्यूज्ड है कि हम प्यार करते कि नहीं. आई गेट इट, ठीक है तुम कंफ्यूज्ड रहो, एक पॉइंट तक रहो. ये क्या बार बार जाओ आओ क्या चल रहा है. लाइक आई फील लाइक Saif Ali Khan is the kind of character who will be in love with a girl as long as she's away from him, which is also what Deepika says. कि आई फील लाइक अगर मैं रिमेंबर जब भी वो डिवोर्स पेपर साइन कर रहे होते वो और राहुल खन्ना, सो शी इवन मेंशंस इट कि अरे अगर I'm waiting कि उसका कमिंग ऑफ एज हो जाए, मैन चाइल्ड का. शी सेज दैट अगर मैंने उसको अभी बुला लिया तो फिर वो आ तो जाएगा, बट देन बाद में उसको लगेगा दिस इज अ बैड आइडिया. सो देन शी वांट्स हिम टू रियलाइज दिस ऑन हिज ओन. मैंने बोला बट what kind of a healthy relationship will you have with this guy if he is so confused? Like ultimately I feel he will, if he has to stay with you, then he has to think that he has no other options. You know what I mean? Which is why I said he was the manic pixie. Like he was, उसका कोई तुक नहीं है, उसकी काफी बातों का या डिसीजंस का, कुछ भी करता है for drama and plot progression and eccentric value additions on screen. But
Like I was not on board with his confusion, you know what I mean? I was on board with Geet's confusion in Jab We Met. I was on board with Aditya's not confusion, but why Aditya let her go to Anshuman like in the second so maybe it's a man-child thing because I really related to that. Wow. You're self-aware. That's point. Can I offer a rebuttal? Of course. So all of that what you mentioned, you know, these people are only seems to be fond of each other when they're away from each other. I think that's the point the movie was trying to make. Okay. And there are people, and I would say I have gone through that as well, when I have felt fonder towards someone when they are not with me anymore. Okay, it's like wo office ka quote hai na, you never know you're in the good old days when you're going through the good old days or something like that. A lot of times it is like that, I thought. And if one more point about the flashback, Harleen's character not being fleshed out, the way I perceived it is you're seeing that flashback from the Rishi Kapoor character's perspective. Okay, fair. So it's more about him being smitten over her than her agency or what she does in her life. That's what I thought. Fair, yeah. I feel like the flashback was so interesting that it made me buy into this entire story. It felt like Imtiaz, I mean the maker, started with a hypothesis of प्यार कैसा होता है etc. सही गलत is a different objective thing. Healthy or not is also, I mean, कोई बात नहीं. तो भाई को लगा कि अभी मुझे समझना है कि पुराना old school love, new school love versus अभी मैं ये पिक्चर के थ्रू करूँगा. और and I think हाँ मतलब the film was an exploration of this problem statement, you know. But you know, I understand, okay, whatever you guys are saying, I understand. But इस सब का conclusion ऐसा लग रहा है देखने वाले को, ये होता है कि old school love है, उसमें दुनिया आपको problem दे रही है. जब society आपको दो lovers को अलग कर रही है, तभी तो like the bond is like much tighter, that you know कि अच्छा इन सब से लड़के हम दोनों को पास आना है. As opposed to the modern kind of love, when nobody is stopping you, then you're like मजा नहीं आ रहा, bye bye. तो yes, and no, I also feel like it is nice that the Indian mainstream media has this one film and Shuddh Desi Romance, जिसके अंदर character लोग confused हैं. और चाहे हम उसको हेल्दी समझे या ना समझे, लिव इन रिलेशनशिप उनको भी कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, करते हैं नहीं करते वाला जोन है. तो वेदर वी एग्री विद इट और नॉट, आई फील लाइक ऐसा लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है. I am sensing a theme here, Urjita. I feel like me and Garima are more like in favor of the old school romantic kind of love, and you're like ऐसा नहीं बोला मैंने. ये सर आप चार डॉट लाइन आगे चले गए. नहीं मैंने इनफैक्ट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट द न्यू स्कूल. हाँ, शी इज नॉट इन फेवर ऑफ द न्यू स्कूल सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन. कि कंफ्यूजन ठीक है, आई गेट इट तुम्हारा कंफ्यूजन. सी आई गेट इट द टेड मोसबी एंड हिज many girlfriends. या कि द टाइमिंग इज नेवर राइट. आई गेट इट कि तुम्हारा बिफोर यू गेट टुगेदर यू कैन हैव ऑल द कंफ्यूजन यू वांट, बट वंस यू गेट टुगेदर गो बैक, गेट टुगेदर. ये पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई एम साउंडिंग लाइक एन आंटी व्हेन आई से दिस, बट मुझे थोड़ा अजीब लगता है. नहीं, मुझको भी वैसा स्टेबल प्यार ही चाहिए, लेकिन अगर वो मतलब जिन लोगों का नहीं है उसका एक्सप्लोरेशन मुझे लगता है हेल्दी वे में दिखाया. चिल्लम चोट नहीं हुई. हाँ मतलब देखिए they were in their own ways weird. They were lying to their partners and जो के लिए तुझे बहुत बुरा लगा. मैं जो होती तुम उसकी दुनिया मैं जला देती. Exactly. So that's my whole point. When you watch these movies, no, when you watch all these Imtiaz movies about cheating and about, you know, confusion, love and all, you like the movies because you're thinking मैं सैफ हूँ, मैं दीपिका हूँ. I am thinking मैं वो गोरी लड़की हूँ जिसको छोड़ के ये आगे बढ़ रहा है. I am thinking मैं राहुल खन्ना हूँ. मैं भी गोरी लड़की से रिलेट किया, not या ना. So when you अपना करता है कोई बात नहीं. Exactly. Like imagine fucking एक तो हर बार मैं ना वो दूसरे साइड से रिलेट करती हूँ कि ऐसा हुआ तो नहीं मेरे साथ कभी क्योंकि मैं हॉट हूँ, बट इमेजिन कि मैं शादी कर रही हूँ, ठीक है, 1 साल से लड़के को डेट कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, एंड देन शादी करते टाइम वो मंगलसूत्र डालते टाइम वो ऐसे उसकी शक्ल पे ऐसी थोड़ी शिकन आ गई है, ही इज फ्राउनिंग एंड आई एम लाइक क्या हुआ, एंड देन ही इज लाइक तभी कुछ नहीं बोल रहा, शादी हो गई, और फिर शादी के बाद बोल रहा है एक्चुअली वी कांट हैव सेक्स, व्हाई, क्योंकि आई स्टिल लव हर. Imagine that happening with you because this fucking idiot can't make up his or her mind. But don't imagine that it's you. Then it's a fun story. If you don't place yourself in the... Yeah, what if I'm relating with the guy who is confused, Urjita? Or okay, so I'll tell you what I liked, okay? I get the macro theme of why you don't agree with it. But like I liked, for example, ये कितना मुझे तो relatable लगा. As a people pleaser. Sure. As a तुम मेरा दिल तोड़ने वाली हो ना गरिमा by the end of this. But no, like जैसे कि breakup के बाद जब वो conversation होता है कि भाई तू ये वाला कपड़ा मत पहन, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, मूंछी मत रख, तू अजीब लगता है. So right, so like
I think Imtiaz cracks these things very well. भाई का observation अलग ही plane पे operate करता है in these nitty-gritties. So that was nice. And ये कि you want to like you have a partner but you're confused about them, and then you want to be in touch with your ex, but where do you draw the line? Do you want to be nice to them or not? All of these things ये है होता नहीं होता है. I agree. यहाँ पे बड़ा ना moral dilemma सा हो गया है. I wish everybody had as strong a relationship that you have. Maybe not with whoever you do. But it's not about having a strong relationship. See, I get it. I know थोड़ा ये अभी मैं अपने जो moral से इसमें घुसा रही हूँ. But ऐसा नहीं. That is not what I mean at all. But I feel, I don't know. They were not. See, Gehraiyya was very convincing. Okay, why? Gehraiyya. I don't believe in the concept. The part where he decides to kill her. See that because sleeping on the bottle. The story, I really like the story. See, अभी Gehraiyya में भी मेरे morals और उनके morals काफी अलग है. But फिर भी the story was very. I don't know why people didn't like Gehraiyya. I like. Okay. नहीं ठीक है. To each Love their Aaj own. Kal, average guys. Gehraiyya, great movie. I didn't say great movie. The story was convincing. Okay. Okay, but, but of course this was like, again, I'm talking about the bad in the beginning only, so that बाद में मैं अच्छी चीजें बोलूं. मैं भी सोच रही हूँ, मैं bad सोच रही हूँ. अच्छा. नहीं मेरे पास एक सवाल है. This is broader question. Do you think Imtiaz Ali is very, like, his idea of love is very traditional if we go by this movie? Because essentially मेरे हिसाब से the crux of the film is कि old school love या पुराना प्यार जो था वो pure था. और वो उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स अगर लेके हम अब आज के जमाने में अगर अप्लाई करें तो आपकी रिलेशनशिप और बेहतर होगी. तो वही तो मैं बोल रही थी. हाँ तो but then agree कर रहे हो भाई. बढ़िया है. नहीं, I'm saying that's so. Is that a sort of, I won't use the word regressive, but is that a little bit of a थोड़ा पास्ट में रहने वाला आदमी बस ये कह रहा है कि गुड ओल्ड डेज? I agree कि this is what Imtiaz wants to say, because have you seen Cocktail? कॉकटेल में भी तो वही होता है. कॉकटेल में भी तो वही था कि बेसिकली द स्टेप आउट लाइन इज दैट ओनली कि सती सावित्री अल्टीमेटली विंस, भले कितनी वो ब्लैंड और बोरिंग हो. सती सावित्री एज अ कांसेप्ट विंस. एनी वुमन कैन बी पुट इनटू दैट बॉक्स. हूएवर फिट्स दैट बॉक्स. Exactly. And वेरोनिका दारू वारू पीती है, वो उसको वैसा ही लड़की दिखा है, दारू पीती है, सब कुछ कर रही है, सेक्स कर रही है, वन नाइट स्टैंड कर रही है रैंडम लड़कों के साथ. तो ऑफ कोर्स शी इज बैड. सेफ शुड ऑब्वियसली चूज डायना पैंटी ओवर हर. तो ये तो ऑफ कोर्स करेक्ट. तो दैट्स व्हाट आई मुझे लगता है सर का अपने इम्ति भाई का मॉरल ना चेंज हो गया. लव आज कल तक एक था, उसके बाद कॉकटेल में बिल्कुल ही बदल गया मुझे. क्योंकि जब भी मेट इन लव आज कल तो विमेन आर एक्चुअली grey characters. They have problematic traits, yet he makes us like them. They're endearing also. So वो सब हो रहा था, and then he regressed with what he did with Cocktail. But you were talking about the idea of love. So I feel like मेरा takeaway बड़ा अलग है इस पिक्चर का. मैंने सोचा ही नहीं, पता नहीं क्यों, कि ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू है. मुझे बस अच्छा लगा कि किसी ने the confusions of modern dating को एक्सप्लोर किया और उसके डिफरेंट फैसेट्स को कि लाइक आफ्टर यू ब्रेक अप यू आर टॉकिंग नाउ, कैन आई पुट योर हैंड अक्रॉस योर शोल्डर और नॉट, और शुड आई गो आउट ऑन अ ड्रिंकिंग नाइट विद यू और नॉट, एंड हाउ what does it mean if I drop you home, and all of these things. Is it okay to have not residual feelings, but like maybe इनको तो थी, but like just ask if you can, या फिर do you judge yourself for having dubious ideas with your ex का situation, like, so I mean I think किसी को तो करना चाहिए ना. Yeah, of course that part I really liked कि उनका जो post breakup conversation है, फिर वो जो ट्रेन में बैठ के जो बात कर रहे हैं उसके I really liked कि मतलब हाँ होता है, this is very normal. And in fact even the relationship, the way it starts कि वो पहले साथ सोए फिर हाँ कि वो मिल रहा है उससे, बात कर रहा है. तो पहली बात तो लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये बात कहीं पे किसी भी गाने में किसी भी मूवी में एड्रेस नहीं करते हैं. दे ऑलवेज शो लाउड म्यूजिक चल रही है, बट फॉर सम रीजन हम दोनों ने माइक लगाया हुआ है जिससे हमें एक दूसरे की आवाज एकदम परफेक्टली पॉडकास्ट सेटअप वाइज सुनाई दे रही है. बट यहाँ पे ये चिल्ला के बात कर रहा है और हमको भी चिल्ला के ही सुनाई दे रहा है. On that point, I think, I don't know if it was a conscious decision or not, but I realized that whenever the film shows the current present day, it's always way noisier, and when they show the past, it's always more quieter, more, or at least जो भी चीजें हो रही हैं आपको सिर्फ चिड़िया की आवाज सुनाई देगी या घर के लोगों की आवाज सुनाई देगी. ambience है. Yes. Whereas whenever they come to present, it's either airports, disco, they're near a shipyard at one point, so there's always that noise. So I think he's trying to make that
again. That's a good observation. Okay, we'll take a short break at this point. When we come back, a little bit more about Love Aaj Kal, and we'll talk about Urjita will talk about the stuff she did like about the movie. So we'll see you on the other side of this break. Hi, this is Cyrus Rogan Brocha, pyar se Rogues. I've come up with a brand new idea. It's a premium product called Club Cyrus Says. It's an offer open just for you. Let me tell you about the product. We've got exclusive Cock and Bull episodes just for you. That's right, just for you. That means others don't get to see it. Also, you get exclusive footage, extra bits, the uncut version of the interviews with celebrities. And these are huge celebrities, not small-time celebrities. Only the big guys come on the show. So you'll get the exclusive bits that nobody else gets. The extra tidbits, special stuff, uncensored stuff you don't want to put out. That's just for you. And for our audio listeners, you get special ad-free content and early access to interviews and sessions and podcasts which nobody else will get. You'll get it first. You're the first people. You're Neil Armstrong. You're Edmund Hillary. You're whoever discovered India. You're that. And by becoming an exclusive member of Club Cyrus Says, you get the power. We transfer the power to you and you become the producers and you will decide what content or what happens on that show. You are the masters and we are your... We can't use words like that. People who work for the masters, basically. So guys, get in. Special audio features include... I forget. I can't remember. And we're back on Has It Aged Well with Urjita and Garima. We're talking about 2009's Love Aaj Kal. Okay, guys, you want to get to the real deep stuff? Yeah. Urjita, do you think you should be friends with your ex? There's nothing wrong with being friends with your ex. Can you be friends with your ex? You can be, but then give it some time. Give it at least 6 months. 6 Okay. months of no talking at all, and then you can talk to them. Because still, तुम्हारी mentally, तो you're used to like talking to them as as they are your boyfriend, as your partner. Right. तो suddenly breakup तो तुमने एक breakup तो शब्द होता है. पर दिल को ये बात समझ नहीं आती, तुम्हारी बॉडी को ये बात समझ नहीं आती. वो हमारा जो दोस्तों आप समझ रहे हो, आइवन पैवलोव ने जो कॉन्सेप्ट बनाई थी अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. देखो मैंने तो ब्रेकअप, दिमाग को पता है ब्रेकअप हुआ है, पर who's the dog between the two? नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, अब्बास भाईजान, आपको बता रही हूँ. तो आपने ब्रेकअप तो बोल दिया, पर फिर बाद में आप वापस उनको दूसरे दिन एज फ्रेंड मिलोगे तो वजाना को तो नहीं पता नहीं दोस्तों क्या है, वो तो फिर भी वेट हो जाएगा ना. करेक्ट. तो ये जो आइवन पैवलोव ने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग का जो बताया था, जिसमें I've never heard Pavlov's experiment being explained like that. Yeah. Thank you very तो much. इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा मैंने तो भी अप्लाई किया अपने लाइफ में कि मैं टॉकिंग स्टेजेस के साथ एक बार ब्रेकअप कर दूँ, कुछ भी हो. तो सॉरी मम्मी, मेरे रिलेशनशिप कभी हुए नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक के लिए बोल रही हूँ ये दोनों के लिए. बट या आई हैव डन दैट, व्हिच इज आई कैन कॉन्फिडेंटली से पीपल कैन आल्सो डू दैट. Garima, what's your thought on this? अगर इंसान खराब नहीं है, जो काफी मुश्किल है, तो होना चाहिए दोस्त. दैट इज माई आइडियल सेल्फ. ये डिसाइड कौन कर रहा है इंसान खराब है कि नहीं? मैं कर रही हूँ. उस मोमेंट में तो आपको खराब ही लगेगा when you're breaking up with them, which is probably one of the reasons why you're breaking up with them. करेक्ट. मैंने डिसाइड किया है कि मुझसे वो फाइनल डिसीजन है. मैं एज समवन हु हैज अ कपल ऑफ एक्सेस, कहीं खराब हैं और कहीं ऐसे हैं जिनके साथ शायद आई वुड लाइक टू बी इन टच, बट मुझे ना को नहीं पता है. और दैट एंड आई एग्री विद यू कि थोड़ा टाइम देकर शायद बात कर सकते हैं. दैट इज व्हाट माय आइडियल सेल्फ वांट्स. Can I do it? I don't know. Okay. I'm still working on it. But yeah, I think in an ideal world, a healthy, any ship or any rapport between two people, it would be nice if it still continues. Yeah. Also, I mean, personally, I'm someone who likes knowing how people are. If I've known you and if you were not an absolute asshole to me, I would like to come back to you and just know how you are and like check in. तो उसके लिए मतलब यार इसको मेरी फैमिली के किससे पता है. हाँ, ऐसे कैसे सडनली जस्ट ब्रेक ऑल रिलेशन. लाइक सपोज अगर मैंने इसको बुआ के बारे में बताया है कि हमारी बुआ घर छोड़ के आ गई, तो आफ्टर 6 months ही विल आल्सो वांट टू नो ना कि तुम्हारी बुआ का क्या अपडेट चाहिए भाई. अपडेट चाहिए. अपडेट ऑनेस्टली अपडेट चाहिए. ऐसा नहीं रोज बात करो दीपिका सैफू की तरह. बट या इनफैक्ट आई फेल्ट कि सो जब भी उनका ब्रेकअप हुआ था, दे साउंडेड ऑल कैजुअल एंड ऑल, एंड सो देन दे केप्ट टॉकिंग, एंड तभी मुझे ऐसा लग रहा था अभी
इनका मीट क्यूट हो रहा है, विच वाज स्लाइटली अनबिलीवेबल कि 2 साल का रिलेशनशिप के बाद अभी तुम्हारा इतना मीट क्यूट हो रहा है, बिकॉज द कॉन्वर्सेशंस कितना भी तुम चाहो, लाइक आफ्टर ब्रेकअप कितना भी कैजुअल करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं टॉन्ट तो एक किसी का तो आ ही जाता है। जो इन्होंने किया भी था ना कि तुम्हारी स्माइल मेरा, ये सब मतलब यार टॉन्ट से ज्यादा मतलब आई मीन इट साउंडेड मोर लाइक अ मीट क्यूट, व्हिच इज व्हाई जब भी वो मीट क्यूट का ब्रेकअप हो रहा था उनका, द पोस्ट ब्रेकअप ब्रेकअप, दैट फेल्ट लाइक एन एक्चुअल ब्रेकअप। सो आई एम लाइक कि तो वेयर वर दीज इमोशंस व्हेन यू वर एक्चुअली ब्रेकिंग अप बिफोर? बट अगेन उसके लिए भी आई नो कि मतलब डिफेंस ये होगा कि दे वर ब्रेकिंग अप बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट ऑल्सो दे डिडंट फील दैट स्ट्रांगली फॉर ईच अदर, व्हिच इज व्हाई द ब्रेकअप वाज सो ईजी. But again, that makes me think that maybe the relationship was not that strong. Yeah. 2 साल में टाइम पास ही कर रहे थे वो. The reason we don't know that, of course, because like I mentioned in the beginning of the film, they sort of forward through that and don't show us those moments. So they just show them kissing in the car and then we fast forward. So yeah. 6 महीना का बता बोलना चाहिए था रिलेशनशिप था, because 2 years it is very unbelievable यार. How can you break up so casually? मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन के ना कि मेरा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बहुत ज्यादा ही विलिंग है. मैं तो मान गई भाई. मैं क्या सही कह रहे हैं. I have bought into it too soon. You're making me question everything actually. See, I get it, right? See, if you would have watched this movie for the first time now, no, तो तुम भी ये सब चीजें agree करती. अभी अगर कोई randomly मुझे बोलेगा कि you know सत्या मूवी में के faults ऐसे कि ये गलत लग रहा है मनोज बाजपेयी कैरेक्टर, मैं बोलेगी तू गैंड मरा. Correct. So I get it. I get it. So there are movies जिनके लिए हम थोड़ा ऐसा रहता है हमारा, हमने बचपन में देखी थी, बचपन के माइंडसेट के साथ देखी थी. तो बेसिकली ये कह रही है बॉटम लाइन अगर मैं तुझे तू सिर्फ बायस से आ रही है. ऐसा नहीं बायस से आ रही नहीं कि बचपन के माइंडसेट से हमने देखी थी ना, so which is why we only remember the good parts. But I still enjoyed like subtleties such as कि वो like how they do that thing in the car. Okay, I mean अगर थोड़ा सिनेमा का सिनेमा की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें दर्शाई जाएं थोड़ी सी कुछ some kind of reality हम represent कर पाएं on screen without being problematic. So I think he did his karma by you know doing that cute thing that you do. वरना mostly in films and shows you basically just see people jump on each other and sexily make out, right? And यहाँ पर that awkwardness was explored, so I enjoyed that and I thought there was some kind of intimacy in it. Okay. Did you guys? मैं उल्टा ही पॉइंट बोलने वाली थी. मैंने कहा कि ऐसे कौन करता है? गर्ल्स एंड बॉयज हमने भी मेकआउट किया है, ठीक है. हम भी ऑकवर्ड रहे, ठीक है, बट ऑकवर्ड ऐसा ऑकवर्ड नहीं होता है. बट अगेन ऑफ कोर्स दिस इज Urjita, I think you're just not vibing with Imti. this movie maybe वो थोड़ा. बट अगेन सी I bought into that टिंग वाला थिंग जब भी वो जो के साथ करने का ट्राई करता है एंड आई एम लाइक अच्छा दिस इज सपोज्ड टू बी कॉल बैक. सिनेमा के साथ so even when Deepika black coffee मंगाती है I'm like call back. यार एक डायलॉग में भी कॉल बैक था, वो मैं बड़ी खुश हुई थी. मैं अच्छा गुड राइटिंग, फ्रेस्को डिस्को एंड आई वाज लाइक ये तो बुरा जोक है, लेकिन जब उन्होंने आगे यूज किया फिर से कि तुम्हें फ्रेस्को करना है डिस्को करना है ऐसा कुछ यू नो लाइक तो आई वाज लाइक good stuff. Like आता है भाई को and dude Imtiaz's dialogues. I was about to ask though, I was a little disappointed by the dialogues if you compare this with Jab We Met, because Jab We Met is so sharp. And like I mentioned, even the smaller characters have such killer one-liners. As compared to that, I felt this was a little in between. But you were saying about dialogues. Like we just put like Garima इतने enthusiasm से कुछ aspect introduce करती है. And either one was like अरे यार. मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ इम्ति भाई को जस्टिस दिलवाने की, पर तुम छोड़ना मत हमें क्योंकि तुम सिकनी हो भटिंडा की, ठीक है. Sorry, what give us your opinions on Dude, I do think कि he ushered this closer to reality dialogues with Jab We Met, and to hold him to his own standard is fair, but also we could be a little more forgiving because I think they were good. I like again how he blends Punjabi in English and the fact that he was doing English. इससे पहले तुम ही होता है सारी पिक्चरों में, इसमें थोड़ा तू तड़ाक भी है, which is mostly how we speak to our partners, right? हम तुम रात को दारू पीने आओगे या you know तुम मेरे साथ ऑटो में घर चलोगे तो नहीं बोलते हैं हम. तो फिर एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी, और just generally द फैक्ट दैट ये बम्बलकोर फॉर एंटरटेनमेंट इन बॉलीवुड करता है, और द फैक्ट दैट यहाँ पर कैरेक्टर्स थिंक अलाउड करते हैं,
while we can poke holes in that, I think that's also an interesting Sure. dialogue writing situation Yeah, happening, yeah, right? of इससे पहले course. कितने से भारी भारी dialogues होते थे, Hmm. तो I think that he Yeah. broke. You have Okay. some. This I will also agree, and even I had this point कि but thinking about the movie from the context of that year कि वो टाइम पे कैसे मूवीज आते थे, उस हिसाब से इसका डायलॉग राइटिंग आई फाउंड वेरी नाइस, है ना, fresh. very fresh. And in fact Imtiaz Ali, I know I made fun of it before, but that was just for jokes, okay? I really liked Saif Ali Khan's वो monologue, जो inner monologue जो करा था, because I liked her. So now I figured it, because मैं पहले ही फिगर कर लिया था, अच्छा ये inner monologue इसको आदत है, जो दिमाग में सोचना होता है, he literally thinks out loud. So उसका वही चल रहा था, and I really liked that. Was really fresh कि तुम ये ऐसा क्या, ये इनफैक्ट वो जो वाला सीन था कि दीपिका शादी के मंडप में इससे बात कर रहा है, वो मुझे बहुत सही लगा था. वेरी गुड राइटिंग, है ना? तो ये I want to talk अच्छा about लग that रहा scene. ये काफी हाँ. About that scene, I felt like दीपिका pulls off these roles जिसके अंदर आंख के बिल्कुल रिम पर ना पानी होता है उसके, हाँ, और हाँ. आंसू गिरता नहीं है, Yeah. और वो ऐसे देख रही होती है मेल एक्टर को. वो कबीरा में भी होता है वो जो Yeah. वो वाली पिक्चर में. Yes. और बस मैंने कहा यहाँ पे कट करेंगे, वो मुड़ेगी और फिर वो कबीरा वाला आप गाना चला भी सकते हैं. तो काफी सिमिलर सीन्स थे ये दोनों, Yeah. एंड दीपिका pulls them off because I guess big eyes. So I want to talk about that scene because, and that scene is sort of related to another point I want to make. We spoke about Deepika. What did you guys think of Saif in this film? Did you like Saif? I think I don't like it. इतनी आप लोगों को क्या लगा? सन्नाटा क्यों है? I was hoping you would say something. And I was hoping आप नहीं हाँ. Okay, I'll give you my opinion. I think he's slightly miscast. I think Yeah. I didn't buy the chemistry between him and Deepika. Yes. For whatever reason, he looks older in this Yeah, film right. than he does in some of his more recent films. I don't know why. The haircut was like a very bad synthesis of 90s haircut. Yeah, And yeah. उसकी flicks थी यार बीच में, हाँ. आप लोगों ने नोटिस किया था? हाँ. हल्का सा उसके बाल आगे आ रहे थे, उसका Yeah. forehead छुपाने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए. But all of that sort of culminates in that Shadi wala scene, which for me I think is a great example of Hindi film acting, where I also feel he's overacting and overdoing it, but it's working on Yeah. me, right? I got a bit of that bit of a tone. आप लोग agree करते हैं? I agree, he was miscast. I Right. think ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे पठान में भी लगा था, even though I really love शाहरुख, Right. कि like I think we're done with You think seeing Shahrukh was miscast in Pathan? maybe Deepika, I don't know dude. It's a whole different podcast. Say it the way. No. कि सेंसर क्यों कर रहा है? It's fine. हाँ, If we, हम लोग काटते नहीं है, ठीक है? people have opinions about older female actresses looking old all the time. Dude, So it's okay. so we basic, have yes. I mean, those I opinions. love watching Saif. I love watching Shahrukh. I love watching Deepika. Somehow I cannot see them romancing each other on Correct, screen yeah, anymore. yeah. And तब भी ये जो ट्रेंड है जो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है कि older men, younger women वाली casting, Right. that's Yeah. so Also- वो तो अटकता है, वो खटकता है, लेकिन सैफ आई थिंक भाई कर रहा है एक्टिंग, सैफ वो कर रहा है, हाँ, उसको उसका जान डाल रहा है. innocence था उसमें जवान आदमी का इनोसेंस था. Correct. Okay, which is not the case with like भाई टाइप एक्टर्स, you know, जिनका ऐसे दिखते भी ओल्ड है, बात भी ओल्ड आदमी वाली करते. लाइक इमेजिन, लाइक सपोज इफ अ सीन, ओके मैं कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ हाँ. कि सपोज अगर सीन में लड़के को अगर बोलना हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सैफ विल जेन्युइनली से इट लाइक अ बॉय वुड कि अरे तुम Hey, you're looking good today. या तुम बहुत अच्छी लग रही है यार. You're looking very, you're good looking. Okay, अपने कुछ तो इम्प्रोवाइज करके बोल देगा. And on the contrary, भाई सुंदर हो. तो you know what I but, mean. but That's the bhai of like 1993 would have probably been closer to the Saif version of it, right? It's now that he doesn't put more of an effort. No, मैं वही बोल रही हूँ ना कि Saif, old Saif also would put Okay, in that effort. got it. कि at least you sound young, if not Right. look young. Saif sounded young, he didn't look young, I feel, in this You know, movie. sometimes you feel like a character, an actor has conviction in the character, so even if things are going wrong, वो you know वो चल जाता है. तो I think that is what happened. When you see them initially, I feel like I wasn't on board, but भाई was trying. Sure, yeah, I mean, he's good. I won't say He's he's good, bad, but also considering the fact he has so many scenes with Rishi Kapoor, who's just so natural as the old Sardar ji. It just kind of stuck out a little bit more. But आपने भाई की बात निकाली है, so Urjita, I have to ask you, did you watch KKB KKJ? नहीं होला किधर नहीं होला
लगदा मेरा नहीं लगदा नहीं देखी बट देखी बट मैं OTT पे देखूंगी मुझे पैसे नहीं देने वो मूवी के लिए. Why is Rahul Khanna the same character in all his films? He's the exact same he was in Wake Up Sid, and you pointed out he's also the same in Hollywood, Bollywood. Yeah. I think when you're that good looking and that suave, you don't need to play anything else. क्या बनाएंगे उसको? Yeah. So Rahul Khanna, I would also like to say that big fan sir, big fan of your body sir, very nice. Sir, you can play whatever role you can play my child in a movie sir. I will personally mother you sir, no problem sir. But so हमेशा ना राहुल खन्ना की तरफ उनके Instagram post के comments में यही रहते sir, why don't you come back to Bollywood? Why did you stop making films? Why did you stop acting in films? मुझे भी ये सवाल आता था. फिर I watched this below movie. Below that it says choke me daddy. Yeah. तो मैं नहीं ऊर्जा दूसरे अकाउंट से कर रही है तो हमेशा ही पूछते कि आप क्यों नहीं करते मूवीज, आप क्यों नहीं करते. मैं भी ये सोचती थी until I watched his acting in this movie and I'm Hey, like okay, makes sense. I think some people take right decisions. Yeah. So it's the same thing, no? Ki Rahul Khanna and also the Miss World. I forgot the guy who featured in 16 December and Milian Soman. Wow. Okay. So दोनों का भी same है ना कि acting. खन्ना के सामने सोमन भूल गई, मतलब अलग ही चल रहा है खन्ना के साथ तेरा. Nice. Yeah. So तो वो दोनों का भी same है. They figured that they can't act at the right time, and they decided that okay, we don't want to keep doing this. We can just exit by being, you know, कि okay हम hot है, that is our image. Yeah. So I really like that about them. कि अच्छा नहीं, they exited at the right time. But what did you think about his character in the movie? I think one dimensional and उसका एक काम था भाई का. Yeah, exactly. एक काम Served था the वो purpose. करके चला गया वो. ठीक But है. I want to ask about that whole little marriage scene that they have where Deepika gets married. Deepika's character gets married, and then she confesses to him that she doesn't love him. Yeah. And I categorically remember कि the theater was laughing at that, especially when she says कि मैं बाद में माफी मांग लूंगी. ठीक है, तब तो मतलब theater हंस पड़ा था कि ऐसे कैसे बोल रही है. Yeah. What's going on in that scene? Did you find it believable? Do you think that the scene is believable but the performances was off? Because I think something was off in that scene. I didn't buy it. I think so. Again, I think this is in the writing. Imtiaz does hyper emotional scenes and he puts a subtle-ish joke somewhere. Like do you remember that scene where there's always one hyper Punjabi uncle in all of yes. जब भी मैक में भी था पवन मल्होत्रा और इसमें कोई तो है ना कर रहा. तो वो एंड देन उसमें एक आंटी आती है, कितना यार इतना इंटेंस सीन है, वो बोल रहा है तुम शादी नहीं करोगी, मैं मार दूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा. एक आंटी आती है पंजाबी आंटी, बोलती ठंडा हो जा पानी ला के दे इसको. कोई गल नहीं फट जाऊंगा मैं, कोई गल नहीं, you know. So I think and this is one that was also the one that you're mentioning. Yeah. So he does that. I think this is by design. Okay. Unless people were not buying it, I don't know. Yeah, but also their whole relationship, I don't know. Again, it was maybe funny. It's like तो could you not figure कि वो एक साल में Deepika was not into you? Like like that. Yeah, तो onus पे डाल दे. because I'm like ठीक है तूने शादी वगैरह कर ली. मैं ऐसा नहीं, I'm not victim blaming. मैं ऐसा नहीं कर रही कि राहुल खन्ना deserved because he didn't. ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही. I'm just saying that दीपिका का उसकी तरफ जरा भी अट्रैक्शन दिखाया ही नहीं है. बस उसको एक सीन में स्वीट हार्ट बुला लिया फोन पे. That's it. And I feel like मतलब मुझे That's my worst nightmare. What if the day after the marriage you find out you don't love the person you married? That is a possibility, right? That can happen. That must have happened to someone. मैं ये सब सोचा नहीं. मैं मैरिज नहीं सोचा, कोई है नहीं प्यार करने वाला. क्या आप बस फ्लो में चले गए. हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं लोग. इतना दूर का सोचा नहीं मैंने कि पहले प्यार होना चाहिए उसके लिए. But I feel like people go for, when you go for interesting characters, like if they didn't make us buy into Deepika and Rahul's love story, yeah. Nor did they make us buy into Saif and Joe's love. So they fully did that thing that filmmakers do, which is जितना जो हम दिखा रहे हैं वो उन्होंने he did it well. So yeah. Okay. I guess. So we both sort of agree that this film was slightly ahead of its time. Why would you say that? Like what aspect of it? यार मैं तो मतलब क्योंकि शायद मैं छोटी थी और मैं पंचकुला में थी, तो वहाँ पर तो कोई क्या ही मचा रहा था, क्या ही क्वेश्चन कर रहा था अपनी relationships. So as I think today as someone who is based out of Bombay and I live this so-called modernish life which has more freedom and I have more agency on my life, I vibe. I see Deepika and Saif not figuring how to go about their relationship or not trusting your own feelings about somebody and being confused about all of that. I vibe. I relate.
agree with that, and I think मुझे ये लगा क्योंकि this film was I think made pre-Tinder, pre-Bumble and all of these dating apps. So I was like, this film is almost predicting that कि एक बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है जब आपके पास और choices होंगी, agencies होंगी, and you will go to meet a person already knowing what is their favorite song, what is their favorite movie, everything. That art of conversation will go as compared to the old story that they're showing. इस बंदे ने शायद बात भी नहीं की इससे, फिर भी वो इतना प्यार में पड़ गया उसके. So that was very interesting, which brings me to the new Love Aaj Kal, which you both have seen. आना ही क्यों है वहाँ पर? I can see उस चौराहे को मिस कर देते हैं, मैं कहूँगी सिग्नल टाप जाते हैं. But I can see why Imtiaz would want to make this film again, because in the 11 years since, the nature of love has changed so much. But since I haven't seen that film and you guys have. I haven't. I've you haven't seen bits and pieces. Oh, okay. Oh, so Garima, सारा बोझ मेरे पर है. इस अगला डिफेंस आपको जो करना है. सारा बोझ तुम पर है. Get it? जीत गई भैया, कहाँ डाल देना. एक नटशेल में बता दीजिए आपको नई लव आजकल कैसी लगी. तो मुझे पहले मैं सर की इम्ति भाई की मोटिवेशन समझना चाहूँगी. तो आई थिंक इट इज़ व्हाट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग अबाउट द फ्लैशबैक वाज दैट व्हेन इफ यू आर शेयरिंग अ स्टोरी और एनेक्डोट अबाउट योर लाइफ विद मी, आई वुड नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इमेजिन पीपल फ्रॉम माई लाइफ एज दोज कैरेक्टर्स, राइट? सो जस्ट आई मीन आई साइक्ड ओवर द फैक्ट कि टू पुल दिस ऑफ कि करंट एक्टर आपका प्रोटैगनिस्ट सेम एक्टर प्ले करेगा यूथ में इज स्मार्ट एंड नाइस. तो थोड़ा मेरा सिनेमा वाला खड़ा हुआ. तो बट सो आई थिंक ही वांटेड टू रिक्रिएट दैट एंड इट डिडंट वर्क. एंड आई थिंक हिज आइडिया ऑफ लव, पर्सनल अटैक लगेगा ये, बट इट हैज़ रिग्रेस्ड एंड मे बी doesn't understand modern relationships anymore. And while I love how he's in love with Punjab, Delhi and पहाड़, I think saturate हो गया उसके वहाँ के insight सब. तो जैसे अभी उसने दिखाया था कि कार्तिक किसी बरसाती में रहता है, ठीक है, लेकिन उसका घर भी है दिल्ली में और वो बहुत आलीशान है, और मतलब कुछ भी अब आप कुछ भी कर रहे हो, अभी कुछ मोटिवेशन नहीं है, ज़्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हो. हाँ, मत करो, अभी कुछ और बना लो, कोई और नया अपने जो समझ आ रहा है उसके बारे में बना दो. तब वो समझ आ रहा था उसके बारे में पिक्चर बना ली थी. पिछला दिल्ली एक्सप्लोर करके आओ कभी, कल्याण कल्याण का पता आई गेस. हाँ, और क्यों अच्छी नहीं थी, हाँ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं पता. कहानी इतनी फॉरगेटेबल थी. तो स्टोरी आल्सो यू डिडंट लाइक मे बी इफ ही हैड हायर्ड बेटर एक्टर्स. हाँ, no, story also was not good, writing was also not good, it was not fresh, dialogues were not working. Understanding of character was, I feel, कहाँ मतलब कुछ था नहीं, सर के हाथ में नहीं था. ऐसा लग रहा था कि ऐसी लड़की मैं तो नहीं जानती, ऐसा लड़का मैं तो नहीं जानती, और बिलीवेबल नहीं थे कैरेक्टर्स कुछ. तो बहुत आउटडेटेड हो गया था आई थिंक आइडिया ऑफ लव बाय द टाइम लव आजकल 2 केम आउट. एंड यस, डेफिनेटली characters, actors, everything was bad. So wow, instead of an update it got like a more regressed version of it. That's sad. Anything else you guys want to add? I have one more point and then we can sort of go to the rating. Yeah, I just had to add this one point ki so this is the, I don't know if you guys have watched this movie, Almost Pyar with DJ Mohabbat. Anurag Kashyap की movie है. तो even though story was like floozy only, story इतनी खास नहीं थी, but when it comes to understanding the way modern relationships work, I think Anurag Kashyap has done a great job. The dialogues, I really like the dialogues, I really like the characters उसने जैसे बनाए. Like I feel like ये movie किसी जवान इंसान ने बनाई है. Interesting. So that I really like. So when you mention कि इम्तियाज़ अली का थोड़ा regressive idea, नहीं, हमने दूसरे movie directors में भी देखा कि eventually they end up sounding regressive in their newer movies. So Anurag Kashyap, I feel he was very fresh and it was very मतलब unlike Anurag Kashyap. Interesting. हाँ. So that I really liked about. I think you guys, I don't know why people are not watching. It's not that bad. You should I saw the film. Watch, So that film also follows 2 sort of strands of storytelling. Yes. And I really like the one that's set in India, which also deals with a little bit of what is claimed as love jihad and all of that. But overall, I don't think the film worked for me. But interesting. I never made that this movie comparison. Like the characters were really good. Like to know. Well written. In I fact, thought Man Marziya was a way more youthful story than Man Marziya, it is about adults, no? Yeah. इसमें teenagers दिखाए थे. So Love Aaj Kal is about adults behaving like teenagers. Kids. Peppa Pigs, to be more precise.
एक चीज which sort of stuck out a little bit like a sore thumb, I think this film doesn't portray therapy very positively. There's just one scene where Sav goes to see a therapist and she just says positive vibes feel karo. क्यों नहीं feel कर रहे हो? I imagined and assumed that that was वो जो corporate structures में usually HR या फिर ऐसे I assumed it was not a therapist because a therapist would not perhaps say anything like that. And also वैसा setup भी नहीं होता है ना जैसा दिखाया है. हाँ वो बड़ा office-esque situation. So मुझे भी figure नहीं हुआ until she asked him कि is there anything else that you're hiding from me? It was not until she said that I realized this is a therapy setup. तो मुझे genuinely लगा that it is maybe she's just an understanding CEO who's being like कि अच्छा ठीक है तुमको time लगेगा but तूने कल report दे देना positive energy के साथ. Yeah but बेटा I'll give you 2 days max to get over it. Okay वो ऐसा लग रहा था. I think maybe till Love Aaj Kal, this film only, and maybe not so much after this in his filmography, Imtiaz had a lot to say about modern love, about showing certain aspects of life maybe that he had experienced or observed and portray them on screen, including his hatred for 9 to 5 job and just corporate structures. Correct. After which in other films वो themes repetitive हो गई थी और हाँ तो फिर इसीलिए तो रणबीर को लिया फिर तुम ड्रीम फॉलो करो बेटा अपना. तो और एक चीज मैं बोलना चाहूँगी कि this is something that I liked about the movie कि liked about the movie नहीं but this is what I found interesting about most movies around that time कि वो टाइम पे ना अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे जब ये नया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप्स आया था तो सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता था कि ओके आई एम अ बॉय एंड आई एम कंफ्यूज्ड इफ आई लाइक हर और नॉट. ओके आई एम कंफ्यूज्ड तो एज लॉन्ग एज आई एम कंफ्यूज्ड आई एम द हीरो एंड देन लेटर ऑन आई कैन चेंज माई माइंड ऑल्सो कि ओके नाउ आई लव you but when I say I love you you're supposed to believe me. I'm serious, you cry with me. Okay but if the girl decides to do the same thing, if she is saying I love the boy, उसके seriousness को seriously नहीं ले रहे, उसके seriousness को तुमने you're treating her like Deepa from दिल चाहता है. Male gaze बकायदा है इसमें कोई doubt ही नहीं है. तो ये मुझे ना काफी annoying लगती है बात कि if a guy is saying I'm confused I'm actually playing around, ये मेरा fuck boy गिरी करने का time है. We're still not grown up ऐसा चमाट लगा. Man children ये जो romanticization of confusion of just the boy absolutely ये मुझे काफी बचना है सीनो. बट रणबीर कपूर ने उसी पे तो करियर बनाया है ना पूरा अपना. तो गलत है ना मैं थोड़ी ना करियर सही है उसने करियर बनाया तो अपने मॉरल्स छोड़ दे ऐसे थोड़ी ना होता है. Garima, I feel like you want to say something very serious. So this is like I feel like this is just like taking the concept of casual relationships and using that for the male benefit. This I didn't like. I find it very weird कि अच्छा सैफ अली खान cool करेक्ट मैं ऐसा थोबड़ा फोड़ने का मन करता है. नहीं बिल्कुल कि ओ फीमेल इमोशंस क्या होता है मेरे इमोशंस ज्यादा शी वाज वेटिंग you're right, she was waiting for him. उसने वो बैठी थी वो कह रही थी आएगा अभी आएगा कभी रियलाइज होएगा अपना कमिंग ऑफ एज कर आएगा. तो आई हियर यू मतलब मेल गेज तो बकायदा थी. आई थिंक मैं 4 चीजें अप्रिशिएट करने की कोशिश करी बिकॉज मे भी शायद बायस है शायद. ठीक है पसंद थी मुझे नहीं अप्रिशिएट करते ना बोल. सॉरी आई हैव अनदर पॉइंट. ओके तो हां ओके आई गुड मैं अपना पॉइंट्स नहीं okay this is thoda lighter point ki Imtiaz Ali, do you remember how he promoted the movie? I remember the trailers and the teasers I remember the mango people line was in the trailer. नहीं मतलब trailer तो था but do you remember how the movie was promoted? Imtiaz Ali promoted the movie by saying देखो Brazilian lady आई है fresh इससे हिंदी में acting करा है. That was the whole conversation around that movie. I was 11 years old. I still remember कि वो न्यूज़ में बेच रहा था कि ओ कौन है ये नई लड़की पंजाबी सिख is she Hindu Muslim? No, she's a Brazilian. तब वो Zoom TV भी आता था ना तो तब ये खबर थी भाई. Exactly. So I remember this is how they decided to promote the movie and I mean of course fair because see I still remember the promotions. Anything that would bring audience to theater. Yeah, because if he would have genuinely promoted it as a modern relationship तो जाने मन की तरफ fail हो जाती. So I get it. You know she actually auditioned for the Joe part. Giselle, वो बनता था वो चलता वो but then Imtiaz apparently who couldn't find his Harleen saw her audition is like that's my Harleen. She's got to be there. People are weird Urjita, directors are weird. करते हैं डायरेक्टर लोग का होता है थोड़ा.
Okay. हम भी बनेंगे, हमारी भी कोई चुल होएंगे. There is nothing that I would say right now which is not obvious. मैं कोई भी ऐसा मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी जो obvious आपके दिमाग में ना आया हो. But another fun fact. So the voice actor who dubbed for Harleen, उसकी आवाज तुम्हें थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगी? जानी पहचानी नहीं लगी? मैं आपको exactly 3 सेकंड दूंगी ये सोचने को कि इसकी आवाज. Is it another famous actress? Yes. मुझे नहीं पता लेकिन मैं ट्राई करना चाहूंगी. बोली कोशिश करना इंसान का फर्ज है. करीना? नो. एक और पास हूँ मैं, आसपास हूँ. नहीं, not at all. भाई तू बता प्लीज. So the voice actor who dubbed for Harleen in Love Aaj Kal is the same artist who dubbed for Deepika in Om Shanti Om. It was dubbed? Yes, Mona Ghosh Shetty, that's her name. The wonderful voice artist. So जब भी मैं वो सुन रही थी, the first thing that she said on screen, I was like, सुने लाए ये सुने लाए अपने कहीं तो सुने लाए. And then I just closed my eyes and I was like, why am I hearing Deepika? And I'm like, oh, Om Shanti Om. And then I checked, I went, I googled, this is a fact guys, I'm not lying. मैंने research किया है. You're Shazam for dubbing artist. Like किधर है? Yes. तो I didn't know Om Shanti Om में दीपिका का डब किया था. Yeah. क्योंकि ये भी एक थोड़ा चीज धोखा सा लग रहा है मुझे. ये भी एक चीज थी कि दीपिका doesn't know how to speak Hindi when she came, when she was new. पता चल गया. मुझे मेरे नोट्स में एक लाइन है, वो जो डिस्को थेक लेके जाने के लिए तैयार कर लिया है, वो एज वेल नहीं हुआ. ये मैं बोलना चाहूंगी. जब मैंने सुना था कौन बोलता है यार. जय मैंने विक्रम को कन्विंस कर लिया, कल वो मुझे डिस्को थेक लेके जा रहा है. भाई इम्तियाज तुझे इतना कुछ आता है, तूने इतना अच्छा किया, सब ऐसा बोलना आता है तुझको, इंसान कैसा बात करता है तुझे पता है. डिस्को थेक कौन बोल रहा है अभी उस उम्र में. तो दैट वाज रियली बैड. डिस्को थेक पता है, सॉरी जस्ट डिस्को थेक मैंने लास्ट टाइम पता है कब सुना था, जब भी केबल टीवी आता था, याद है? तो केबल टीवी पे ना रूप संगम की ऐड आती थी, तो उसमें बोलते थे अंबर धरा डिस्को थेक के बाजू में रूप संगम, अंबर धरा डिस्को थेक. तो दैट वाज द लास्ट टाइम आई हर्ड. बढ़िया कंटिन्यू. नहीं यही था. हाँ, एक चीज और है, चूतिया मैटिक मुझे बहुत अच्छा लगा. Did they beep it in your in the copy you saw? हाँ मतलब बट अच्छा था, अच्छा किया. आम आदमी आम जनता, आई थिंक मेन स्ट्रीम पिक्चर अगर आपको उनको थिएटर के लिए बनानी है, आई मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्पेस वेयर वी यू नो वर्किंग इन द इंडस्ट्री, आई फील लाइक यू नीड दीज थिंग्स. अदरवाइज इतना आर्ट नहीं, लोग थोड़ा 4 चीजें चाहिए आपको ऐसी जो अतरंगी हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहना चाहूंगी दैट एज्ड वेल. दीपिका वांटिंग मैरिज डिड नॉट एज वेल फॉर मी एट. दैट वाज अ कांस्टेंट इच व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वॉच्ड इट. Maybe I understood it or let it pass, but when I was watching it recently, I was like, why does this woman want marriage so much? Why does she not? So yeah, I think just generally But it's okay for a woman to want marriage, no? Yes, but I think the concept and the conversation आजकल about marriage is so much, and मतलब there are several opinions, right? So and I think वो question भी करने लग गए हैं concept. तो पहले इतना assumed था और अब शायद मुझे considering my own idiosyncrasies मुझे नहीं ठीक लगा. कि बहन को सिर्फ शादी करनी, अच्छा वाला काम चल रहा है तेरा, अभी तुझे एक बंदे के साथ ब्रेकअप किया, दूसरा अभी मिला, उससे शादी करनी, मतलब सो इट फेल्ट लाइक अच्छा ऐसा वॉल पेंटिंग कर रही है, फ्रेस्कोगिरी कर रही है, करना भाई आर्ट्सी रहे. ऑल्सो व्हेन शी दैट कॉन्वर्सेशन वेयर शी टेल्स हिम कि उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं हाँ बोलने वाली हूँ, मैंने कहा इतना डू और डाई क्यों है, व्हाई डू यू हैव टू मैरी, you know, it was like either you marry me or I will marry him. So that just felt like there was no, why was there no third route? So I just want to say she's restoring historical monuments and Urjita's like wall painting कर रही है. मैंने फ्रेस्कोगिरी बोला ना बाद में. है क्या कुछ देख कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी. Hey, I want to talk. लिरिक्स भी अच्छे लगे कि आपको वो वाला नहीं कि run the chaka, run the chaka, run the chaka. Hey, रौला रप्पा यार, मैं एज अ पंजाबी में गीली होगी, मतलब ये बहुत अच्छे से रौला वर्ड यूज किया आपने, थैंक यू. रौला का मतलब क्या है? शोर. Oh, did you like Saif's Punjabi in the film? No. But I was just happy someone was trying to talk in Punjabi on screen. Just, you know, but now that we're talking about music and songs,
shout out to like Irshad Kamil. Can we please? Yes. Can we please? क्या बढ़िया लिखता है इंसान, और हर गाना अलग है. मतलब ट्विस्ट भी इसी ने लिखा है, आज दिन चढ़िया भी इसी ने लिखा है, दूरियां भी इसने लिखा है. आज दिन चढ़िया is पंजाबी. Dude, I mean, I am in awe, fangirling fully, and the fact that these lyrics have aged very well. Like हर breakup गाना या तो ये है या फिर इरशाद कामिल का ही वो वाला जब भी मेट का वो गजल टाइप, आओगे जब. भाई ने हमें 2 ब्रेकअप गाने दिए. Also, Pritam gave 2 sorts of songs. He gave the chart-busting modern songs, and then for the flashbacks, he gave the more traditional Aaj Din Chadya type songs. When Pritam used to. Yes, and Salim Soleiman has done the background music, who we spoke about a lot in our Band Baja Barat episode. So check that out as well. That was our episode on Love Aaj Kal. Let's get to the rating, rewatchability scale. So Garima, we rate the film at the end of the day on a scale of 1 to 10. 1 being के भाई इतनी पुरानी फिल्म है, अब कुछ relevant नहीं रहा है उसमें से, and 10 being के भाई जितनी बार देखते हैं कुछ नया मिलता है. So on a scale of 1 to 10 on a rewatchability scale, how much would you rate? 6.5. 6.5. इतनी तारीफ करके 6.5. I'm very critical. ये वो जो रियलिटी शो में जज नहीं होते जो बोलते हैं कि 10 बट आप निकल गए इस एपिसोड में, आप आउट हो. या ये तो ऐसा हो गया, जंग लड़ ली और फिर बाद में जब भी टाइम है सेलिब्रेट करने का, एक्चुअली मन नहीं कर रहा. तलवार चला दो सीने पे, गूगली मारी ना, इतना सब करके 6.5. आई फील लाइक जस्ट पुट दिस इन द बिगिनिंग. सो इफ यू हैव एनी हेट टू गिव टू मी, तो पहले गरिमा को भी जाएगी. I also want to clarify that I'm not an Imtiaz Ali. I'm a fan of like these 2 films, Love Aaj Kal and Jab We Met, and not the rest. पहले तो आपने बोला था Not even, इम्ती करके जो इम्ती भाई, देखो इम्ती भाई करके जो आपने किया कि Not even Highway? Oh, obviously Highway also. Yeah, okay. I missed that. Basically, I have a special hatred for Tamasha, and but that I feel only because of the hype. उसका जो गलत लोगों ने उसको जो फॉलो कर रखा है, maybe because of that. कौन? तमाशा नो, गलत लोग मैंने इन जनरल बोल रही हूँ. राइट ऐसे बोलने का ना, लॉन्डे लपाटे एवी डूड ब्रोस, जो वो ब्रो रणबीर ने जब उसका क्या ब्रेकडाउन आई रिलेट. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मिसट्रीट किया, मजा आ गया. रणबीर ने जब भी वो आंटी को अपनी अंगूठी पकड़ाई, ओ माय गॉड, मैंने अपनी बनियान फाड़ दी, इतनी बढ़िया लिखी है. मुझे इतना स्ट्रेस है, मैं 9 to 5 जाता हूँ. गॉड, आर्टिस्ट हूँ मैं, मुझे इतना स्ट्रेस है, मैं अपनी बाप की राशन की दुकान में 9 to 5 बैठ जाऊँ. हेट कमेंट्स आने लगे ऑलरेडी. Urjita, what's your rewatchability scale for Love Aaj Kal? Now it has to be less than 6.5. मैं तो नहीं देखूंगी बट ओके, देखनी पड़ेगी तो 3.5. Really that low? मुझे नहीं पता. 3.5. ये मुझे थोड़ा लगा. इम्ती भाई के लिए मुझे बुरा लगा. Wow. I would give it a 6. I think it's a 6 out of 10. It's not bad. अगर मैं साथ देती तो I just want to understand. हाँ, मतलब मुझे 6.5 जितनी नहीं अच्छी लगी, बट 3 जितनी बुरी भी नहीं लगी यार. ठीक है, अच्छी है, गाने अच्छे हैं यार, सब कुछ अच्छा है. गाना अच्छा तो गाने इसलिए तो 3 दिए ना, 3 गाने अच्छे उसके लिए 3. Okay, Garima, we didn't speak about this, but tell us about the work you did for Elephant Whisperers just before we wrap up, and what was that experience like, and something about that. मतलब छोटा कर देती हूँ, क्योंकि पहले तो लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में राइटर क्या करते हैं, तो इसीलिए उसके लिए अलग पॉडकास्ट चाहिए होगा शायद. बट बेसिकली आई वाज द राइटर, आई शेयर द क्रेडिट विद द डायरेक्टर. तो हाँ यार, डॉक्यूमेंट्री में भी तुम्हें सवाल लिखने होते हैं राइटिंग के लिए, ठीक है, होता है. ठीक है, तुम कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो, आप इंसाइटफुल क्वेश्चंस लिखते हैं, और फिर आप बेस्ड ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल्स यू चेंज योर insights and where to take these stories. Did you also get to observe the two main characters from the documentary who are taking care of the elephant? Yeah, so I observed, मतलब हाँ, I went to meet them. Okay. It is one of my most cherished experiences. मैं हाथी को पहली बार मिल रही थी, और अलग ही था यार ऐसे. और वो it's true, like I mean all the research said that elephants are like children, human children. But I saw it in person. That was super chill and nice and cool. And yeah, I met these people. I observed them and बस फिर लिखा. मैं कैसे समझाऊं फिर, मैं कह रही हूँ उसके लिए 2 घंटा और चाहिए अभी. नहीं तो सो पूरा जो उसका आउटलाइन था, सो डिड यू आल्सो लाइक थिंक कि इसमें क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? वाज द नैरेटिव सेट बिफोर यू एंटर्ड
No. So in documentaries ये तो नहीं कर सकते हो. तो what you can writing is basically giving a director in documentary a foundation so that when they're on ground they don't have to think from the scratch and they have the space to at least reject or accept what is on paper. So you explore ki, we assume that there would be a father son bond between Raghu and Baman. तो वहाँ जाकर इस हाइपोथेसिस पे हमने बेसिस पे हमने सवाल लिखे और जो भी थोड़ा कहानी लिखी, फिर वहाँ जाकर कुछ चीज़ें क्या कहेंगे प्रूव हुई सही और कहीं नहीं हुई, राइट? सो फिर एंड देन शी यूज्ड टू कम बैक एंड देन वी डिड सम changes obviously. So I think in documentaries shout out to editors also who eventually set the narrative, because वो जो post production writing होती है वो वही करते हैं. तो Nice. But like you mentioned that कुछ hypotheses होते हैं जो सही निकलते कुछ नहीं निकलते. तो like off the top of your head, can you think of any one hypothesis that you had which might have sounded absurd also, but then which came true or it didn't come true? Anything, any of your favorite? मतलब इतना कुछ वो नहीं था, बट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन कार्तिकी एंड मी वी वर लाइक बमन एंड रघु की कहानी है ये. देन शी वेंट एंड डिड 1 round of production, then she came back, she said there are 2 more characters, there is a belly, and we knew that there was a belly, but we didn't know that she would become such a big part of the film. It is only after going doing 1 round of production that we realized that this is a team. And then I remember फिर कुछ महीने निकल गए थे, and then Kartiki called again and she was like, भाई अमू भी है, basically there's another elephant that is coming in their family. And then we were like, oh, this is becoming like a archetype family, right? So it started as a father-son story and then it became this. So this is how it evolved. I mean कुछ prove disprove वाली बात तो मुझे याद नहीं, पर जैसे एक चीज़ मुझे याद है कि मैं जब गई थी on ground and I saw कि हाथी के बाल हैं और वो उसको जैसे तुम एक बच्चे ह्यूमन बच्चे का बाल एक पेरेंट तेल लगाकर साफ करते हैं या फिर उसको सेटल करते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट दे वर डूइंग. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, सो ये है ना, ये today I have zest for life. Like I saw something like this which you don't know. So ऐसी चीजें. Nice. Yeah. I read this fact about elephants which was really great, that when elephants see humans they feel the same way like when humans feel when they see like a kitten. Yeah, ये तुमने मीम में देखा ना? नहीं यार, कुछ एक जर्नल में पढ़ा था मैंने, ठीक है? उर्जिता बहुत मोटी किताब से आया है ये. It was called 10 Facts About Elephants. Okay. But of course you can watch The Elephant Whisperers on Netflix. Please do watch it. It's a beautiful film. और हम क्या बोले यार, ऑस्कर जीता है पिक्चर ने, तो मतलब अब क्या ही. Thank you Urjita also. I can't take it again. कोई बात नहीं यार. Thank you Garima for taking time out and doing this for us. I hope you had fun. बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. और आप अगली बार भी आपको कभी इम्ति भाई की कोई पिक्चर देखनी हो, बात करना हो, तो आ जाइएगा, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं. ठीक, बुलाओ, बताओ. Urjita, anything you want to plug before we wrap up? So this movie is about Heer Ranjha and Romeo Juliet and पुराने ज़माने का love story. My new stand-up video is also about that. And I know I've been saying this since a long time. Is this why you picked Love Aaj Kal so that you could? No. I know I've been saying this since a long time and people have started commenting also, कह रहे हैं तुम्हारी वीडियो एडिट करने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम में नोलन ने 2 मूवी बना दी. तो नहीं वो फाइनली अभी एडिट वो एडिट हो चुका है, उसका बस साउंड मिक्सिंग वगैरह बाकी है. तो बाय द टाइम दिस एपिसोड कम्स आउट आई एम श्योर मेरा आ ही गया होगा. नहीं है, नोलन डजंट हैव टू एडिट हैबिटेट का ट्रेन का आवाज निकालना है ना, इट इज डिफिकल्ट. तो नोलन को डेट्स नहीं लेने पड़ रहे अपने एडिटर के. एग्जैक्टली. तो बट या एनीवे इट शुड बी आउट ऑन माय चैनल एंड या वॉच इट एंड एंजॉय. थैंक यू सो मच. गरिमा, एनीथिंग यू वांट टू प्लग? वेयर कैन पीपल रीच यू इफ दे वांट टू? भाई इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं 2 मिनट में CV भेजती है, ठीक है? इम्तियाज़ भाई अनुराग कश्यप काम वगैरह करना है तो मैं लिख देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोगों का जो भी है मतलब है ना. Sure. Garima has a great understanding of modern relationships, as we know. Yes. And she will defend your film even if she doesn't like it that much. Yes. वो स्क्रिप्ट तो एडिट कर ही देगी आज की जनरेशन के हिसाब से. So I mean CV पे ऑस्कर विनिंग फिल्म आ गई, अब और क्या चाहिए, है ना? Please कर दो. And you can follow me on Instagram at abbasmomin88 and abbasmomin on Twitter. So yeah, that was our episode on Love Aaj Kal. We will be back next week with a new guest and a new film and hopefully more strong opinions. Our audio listeners can stay back क्या मतलब सुनते रहो for our alternate endings वाला segment. But video पे हमको आपकी विदा लेनी होगी. So
One last time, press the like button, subscribe to the channel, check out the other shows on the IVM Pop YouTube channel, which are Pop Rap and Just a Filmy Game Show. I wasn't forgetting, I was just looking at my producer for strength. So do all of that and come back next week for a new episode of Has It Aged Well? Next week, we'll see you. Bye-bye.